हेलो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और नई एक्साइटिंग वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए मैं एक प्रीसेट यूज़ किया हूँ जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को इस पहली वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को कर लेते हैं शुरू। और हाँ गाइस, आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने मॉडल इमेज को ऐड कर देना है। तो मैं अपना मॉडल इमेज पहले से ऐड करके रखा हूँ। तो आप लोगों को अगर मॉडल इमेज ऐड करना नहीं आता है तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप मॉडल इमेज ऐड कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आप लोगों को एक प्रीसेट को my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh,
7 ही कर देता हूँ। तो यहाँ से नीचे से डन कर देना है। तो फिर से आप लोगों को इस पर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से डिटेल्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसकी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को इसकी स्ट्रक्चर रेंज को करीबन इतना कर देना है। उसके बाद आप लोगों को फिर से इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को इस पर शार्पनिंग को सिलेक्ट करके इसकी शार्पनिंग को करीबन 10 कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यह नीचे डन कर देना है। तो डन करने के बाद तो अभी आप लोगों को इस ऊपर की साइड में तीर की आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू एडिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यह डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को इस इन्वर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर देना है। तो इसका स्ट्रेंथ पहले से 0 होके रखा है। तो अभी आप लोगों को फेस और हैंड से इस इफेक्ट को रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे से करना होगा।
यहाँ पे फ़ोटो हो गया सेव।